Hey everyone, welcome back to day 6 of our 30 days of Cisco configuration series. And today we will learn about static routing and how to configure static routing step by step in easy way so you understand not just how but why we do it. So let's get started. Let's set up our topology first. Now we will use serial cable. ठीक है, तो हमें serial cable use करना है to connect the router with each other. ठीक है, तो सबसे पहले go to router, zoom in, then you'll see switch. ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसको ऑफ करना है एंड देन वी विल ऐड ए मॉड्यूल. ठीक है, देन इसको ऑन करना है. ठीक है, तो इसी तरह से इस राउटर पे भी स्विच ऑफ करके एक मॉड्यूल हमने ऐड कर दिया एंड देन स्विच ऑन. So basically we use this module to simulate two serial WAN connection on a router, okay, allowing you to practice configuring serial links for a WAN connectivity. तो अब हम इसको कनेक्ट करेंगे सीरियल केबल. ठीक है, यहाँ से सीरियल केबल. So now we will configure router. Go to command line interface. Now enable configuration terminal. Host name R1. Interface G00. IP address 192.168.1.1 255 255 255.0. No shutdown. ठीक है, now we will configure the serial link. Interface 30100. IP address 10.0.0.1 255 255 255 252. तो हम यहाँ पे /30 वाला नेटवर्क ले रहे हैं. ठीक है, now clock rate. This command is 64,000. ठीक है, this is used to set its physical transmission speed to 64 kilobits per second. Or this command is used on the DCE, data communication equipment side of the serial link. So this is the DCE side of the serial cable. Go to the router 2, command line interface. No. Enable configuration terminal. Host name R2. Interface G00. IP address 2.1. No shutdown. तो हमें अब इस वाले सीरियल पोर्ट पे IP असाइन करना है. इंटरफेस serial link 0. IP address 10.0.0.2.
and 255, 255, 255, 252. नो शटडाउन। हम यहाँ पे क्लॉक रेट नहीं देंगे क्योंकि ये DTE साइड है, ठीक है। DCE साइड पे क्लॉक रेट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्लॉक का जो आइकन शो हो रहा है, इधर आपको इस वाले पोर्ट पे क्लॉक रेट देना होता है, ठीक है। गो टू राउटर 3, नो, enable configuration terminal, host name R3, interface 300, IP address 192.168.3.1, 255, 255, 255.0, no shutdown, and serial interface 30, serial interface 030, IP address, wait a second, हमने इस वाले पोर्ट पे IP एड्रेस नहीं दिया है ना। Okay, so first configure this. Router 2 पे आ जाओ and then interface serial 301, IP address 10.0.0.5, 255, 255, 255.252, and then यहाँ पे ये DCE वाला पोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉक रेट आएगा 64,000, ठीक है। तो क्लॉक रेट यहाँ पे आपको अप्लाई करना है एंड देन नो शटडाउन, ठीक है। सो राउटर 3 पे वापस आ जाओ एंड देन यहाँ पे 10.0.0.6, 255, 255, 255, 252, नो शटडाउन, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे हो चुका है एंड नाउ we will configure the static routing. So let's just understand the concept of static routing. तो इसमें कैसे होता है, एक डेस्टिनेशन IP एड्रेस होता है और उसका सबनेट मास्क एंड देन नेक्स्ट हॉप एड्रेस। तो ये होता है हमारा कमांड प्रोसेस। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप R1 पे कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो आपको ये दो नेटवर्क्स को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होता है, मेंशन करना होता है। सो दैट्स हाउ R1 नोज द अदर नेटवर्क, ठीक है। तो हमें ये दो नेटवर्क्स को कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले होता है डेस्टिनेशन IP एड्रेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाले नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करेंगे। कैसे होगा, 192.168 2.0, ठीक है। और उसके साथ होता है सबनेट मास्क। जो नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस होता है वो होता है ये नेक्स्ट हॉप, यानी जो नेक्स्ट राउटर या नेक्स्ट डिवाइस होता है वो होता है, जो नेक्स्ट राउटर होता है वो है हमारा नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस। तो R1 के बाद जो नेक्स्ट हॉप है वो है ये 10.0.0.2, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस सेम रहेगा यहाँ पे। जो नेटवर्क एड्रेस रहेगा वो यहाँ पे होगा 192.168.3.0, 10.0.0.2। और अगर हम R2 पे जो है कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं स्टैटिक राउटिंग, तो वहाँ पे हमें ये वाला नेटवर्क और ये वाला नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो डेस्टिनेशन IP एड्रेस में 192.168.1.0 और इसका सबनेट मास्क यहाँ पे आएगा एंड देन जो नेक्स्ट हॉप एड्रेस है, नेक्स्ट हॉप तो R1 के R2 के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट हॉप जो एड्रेस है वो ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस जो रहेगा 0.0.1, और इसी तरह से इस वाले नेटवर्क को यहाँ पे 168
3.0 सबनेट मास्क, और यहाँ पे जो नेक्स्ट हॉप एड्रेस रहेगा वो रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हॉप एड्रेस आएगा ये। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। R1 आर जो भी हम राउटर पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उस वाले नेटवर्क के अलावा जो नेटवर्क्स है उसको हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होता है, बस दैट्स इट। सो नाउ लेट्स कॉन्फ़िगर द स्टैटिक राउटिंग, ठीक है। राउटर 1 पे जाएंगे, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, आईपी राउट, आईपी राउट करके हमें इस वाले नेटवर्क को 192.168.2.0, 255, 255, 255.0 एंड देन नेक्स्ट हॉप एड्रेस जो है 10.2, आईपी राउट 192.168.3.0, उसका सबनेट मास्क एंड नेक्स्ट हॉप एड्रेस वही रहेगा, ठीक है। एग्जिट, यहाँ पे जाएंगे, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, आईपी राउट 192.168.1.0, सबनेट मास्क, जो नेक्स्ट हॉप एड्रेस रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 10.1, और इस वाले नेटवर्क को मेंशन करना है तो आईपी राउट 192.168.3.0, subnet mask, next hop address is 10.6, router 3, enable configuration terminal, IP route 192.168, यहाँ पे 1 का नेटवर्क भी हमें देना है और 2 का नेटवर्क देना है। नेक्स्ट हॉप एड्रेस जो रहेगा ये वाला एड्रेस रहेगा 10.0.0.5, IP route 192.168.2.0 0 और same, exit. Now assign the IP address to PCs. ठीक है। Now let's ping command prompt, ping करना है 192.168.2.10, so the ping is successful here. Now ping PC3 10. So जो हमने static routing किया था, for static routing is successful, go to command prompt, ping 192.168.1.10. Two dot 10. Yes.
So at last, go to router and show IP route. ठीक है. So as you can see, this is the static routing. तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो है राउट दिखा रहा है, नेटवर्क है, 2.0 का एक नेटवर्क है एंड 3.0 का एक नेटवर्क है. और यहाँ पे ये जो है ये है हमारा AD. ठीक है, AD वैल्यू दिखा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस. ठीक है, तो स्टैटिक राउटिंग का जो AD होता है वो 1 होता है. ठीक है, और वाया किसके थ्रू जा रहा है ये, नेक्स्ट हॉप एड्रेस. दिस इज द नेक्स्ट हॉप एड्रेस. As you can check also and show IP route. तो यहाँ पे ये जो S है ये हमारा स्टैटिक राउट है. ठीक है, 10.0.0.1 के थ्रू एक नेटवर्क कनेक्टेड है जो कि 1 का नेटवर्क है, एंड 0.6 के थ्रू एक नेटवर्क कनेक्टेड है 3.0 का नेटवर्क. ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो. So these are the static routing. So if you want to add another network, just create another static route. But remember, static routes are manual, and in large network we'll use a dynamic routing. Okay, जो networking protocols होता है, dynamic networking protocols, RIP configurations, OSPF, AIGRP, BGP. So these are the dynamic routing protocols. Save your configuration. Config, startup config. So that's how static routing works, easy and clear. Now the routers can communicate with each other. And if you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching and see you in the next video.